Alright guys, I'm very much excited to start with today's lecture. आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले कि कैसे हम लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग एआई. ओके, सो लेट्स से वी विल बी अज्यूमिंग एक न्यू प्रोफाइल हम लोगों ने बना रखी है ओके ऑन लिंक्डइन, या फिर हम लोग एकदम स्क्रैच से कैसे लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बनाएंगे एंड उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे हम लोग प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी चाहिए, कैसे हम लोगों को उसका बायो सेट करना चाहिए, कैसे हम लोगों को अपना वर्क एक्सपीरियंस पुट करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग दैट टू यूजिंग एआई. वो भी एकदम बेसिक से स्क्रैच लेवल से लेके एकदम प्रोफेशनल लेवल तक सारी चीजें हम लोग सीखेंगे आज के लेक्चर में कि कैसे ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं. ओके, सो बिल्ड अ प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल यूजिंग एआई फ्रॉम बिगनर टू एडवांस. दैट मीन्स अगर तुम लोगों को कभी दिक्कत आती थी रीच आउट करने में, क्लाइंट्स को रीच आउट करने में, या फिर जॉब्स को अप्लाई करने में, उसमें तुम लोगों को समझ नहीं आता था कि तुम लोगों को अपनी प्रोफाइल की फोटो कैसे रखनी चाहिए, या किसी और इन्फ्लुएंसर की तुम प्रोफाइल देखते थे, किसी और क्रिएटर की प्रोफाइल देखते थे, या फिर किसी एक वर्किंग इंडिविजुअल की प्रोफाइल देखते थे जो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में काम करे, उन्होंने कैसे अपनी प्रोफाइल इतनी अच्छी प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड कर रखी है. तुम्हारे दोस्तों को लिंक्डइन से ही जॉब ऑफर्स मिल रहे हैं या क्लाइंट्स मिल रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए, बट तुम लोगों को नहीं मिल रहे, तो वो क्या पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान रखने चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं. Okay, so build a professional LinkedIn profile using AI from beginner to advanced using ChatGPT and Gemini. Okay, so हम लोग ChatGPT and Gemini free tools को use करके ही ये सारी चीजें करने वाले. There's no requirement of any paid tool. तो सारी चीजें तुम लोग फ्री में आज की क्लास, आज के लेक्चर में जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज के वर्कशॉप में जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी चीजें तुम लोग फ्री में ऑप्टिमाइज कर सकते हो. ओके, सो वर्कशॉप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं. बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, एकदम स्क्रैच से कैसे प्रोफाइल तुम्हें बनानी चाहिए, कैसे सारी चीजें सेटअप होगी. So I'll be taking an example of a student named Karthik who is studying at let's say Manipal University Jaipur, and वो कैसे एक थर्ड ईयर स्टूडेंट होके कैसे अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेगा सो दैट वो जॉब्स में अप्लाई कर सके, या फिर वो फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स को अप्रोच कर सके, आउटरीच कर सके फाउंडर्स को एंड ऑल दैट, या फिर एचआरस को आउटरीच कर सके. वो सारी चीजें हम लोग आज के वर्कशॉप में देखने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी ऑल्सो सीइंग कि ये सारी जो टेक्निक्स है जो हम लोग आज देखने वाले हैं, वो सारी टेक्निक्स एक बिजनेस इंडिविजुअल के लिए या एक फ्रीलांसर के लिए भी सेम टू सेम अप्लाई होती है, तो उन लोगों को भी कैसे ये चीजें करनी चाहिए. ऑल ऑफ दैट विल बी कवरिंग टुडे. ओके, ऑप्टिमाइज अबाउट सेक्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे, विजिबिलिटी को कैसे इनहांस कर सकते हैं, विल बी सीइंग दैट, पावरफुल हेडलाइंस कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस कैसे इनहांस कर सकते हैं, एंड खुद का एक पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीजें विल बी कवरिंग टुडे. ओके, सो प्रोफाइल फोटो, सबसे पहले प्रोफाइल फोटो ऑप्टिमाइज करना. Next is banner. Okay, I'll show you what exactly do we mean by that. So I'll just log in into a new account that I recently created just for this workshop purposes so that I can make you understand कि कैसी ये सारी चीजें काम करेगी. So now you can see right now over here Karthik Kumar के नाम से ये ID बनी हुई है. Okay, just Mumbai, Maharashtra, India, just random address I have put over here. Okay, and ये काफी vague सी प्रोफाइल लग रही है, right? इसमें कुछ भी if you will see over here no specific information is mentioned. कुछ भी information mention नहीं है यहाँ पे, ठीक है? काफी raw प्रोफाइल लग रही है. बट इसी प्रोफाइल को हम लोग एक प्रोफेशनल प्रोफाइल, जैसे कि मेरी इफ यू विल चेक आउट माय पर्सनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, दैट इज आल्सो अ वेरी प्रोफेशनल प्रोफाइल आउट देयर. तो मैंने कैसे अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया एंड कैसे सारे लोग सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं उनके लिंक्डइन मैनेजमेंट होती है, वो सारी चीजें कैसे चलती है, वो सारी चीजें आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. ओके, सो प्रोफाइल फोटो, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो ब्लैंक सी प्रोफाइल फोटो लग रखी है, या फिर जैसे अभी मेरी प्रोफाइल फोटो आई एम हैविंग ओवर हियर, ठीक है, या फिर मैं अभी जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पुट कर दूं, या फिर मैं एक पार्टी में गया हुआ और समथिंग लाइक दैट, वो मैं प्रोफाइल फोटो पुट कर दूं. वो सारी चीजें हमें नहीं करनी होती है, रैंडम कोई भी पिक नहीं होनी चाहिए. लिंक्डइन इज अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, वेरी प्रोफेशनल नेटवर्क. सो ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत बारीकी से करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीजें. खुद को एक प्रोफेशनल मैनर में दिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन लिंक्डइन. तभी तुम लोगों के कनेक्शंस मिलेंगे, तभी तुम लोगों को आउटरीच कर सकते हो तुम लोगों को, एंड तभी तुम लोग जॉब्स के लिए और अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, एंड सिलेक्शन के चांसेस तुम लोगों के बढ़ जाते हैं. चाहे तुम फ्रीलांसिंग करो, चाहे तुम बिजनेस ऑनर हो एंड तुम लोग क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाह रहे हो, या फिर तुम एक स्टूडेंट हो, या फिर एक जॉब सीकर हो जो जॉब लेना चाह रहे हैं, उन सब के लिए लिंक्डइन पे प्रोफेशनली दिखना खुद को, दिखाना खुद को इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. That is why it is very important to optimize your LinkedIn profile. चलो LinkedIn profile तो सब लोग क्रिएट कर लेते हैं. इन दिस केस मेरा ऑलरेडी अकाउंट था, एक न्यू अकाउंट, सो मैंने उसमें लॉग इन कर लिया डायरेक्टली. बट इन योर केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ न्यू अकाउंट, जस्ट बेसिक डिटेल्स पूछेगा वो, ओके, योर नेम, ईमेल आईडी एंड एवरीथिंग, मोबाइल नंबर एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें पुट करके विल बी ओवर हियर. एंड एक नॉर्मल जो ना क्या करेगा विदाउट ऑप्टिमाइजिंग,
एजुकेशन पूछा है, एडुकेशन पूछा है, वो वहां पे पुट कर देगा, एक्सपीरियंस पुट कर देगा, प्रोजेक्ट्स पुट कर देगा। बट इसी में जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है एंड जो एक सिंपल प्रोफाइल होती है उसमें डिफरेंसेस आने चालू हो जाते हैं। ओके, नॉर्मल पीपल वुड डू लाइक कि ओके एक्सपीरियंस, आई वर्कड एट सो एंड सो कंपनी, या फिर आई वर्कड एट XYZ इंटर्नशिप और समथिंग मैंने कोई की है एंड वो मेंशन कर दिया। अब उसमें क्या स्किल्स तुमने सीखे हैं, क्या चीजें तुमने कवर की है एंड कितना अच्छा तुम उसमें परफॉर्म किए, वो सारी चीजें कौन मेंशन करेगा, राइट? तो वो सारी चीजें ही ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है। अब द थिंग इज कि हम लोगों को जो लग रहा है वो पुट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग, राइट? तो वही सारी चीजें हमारे लिए AI हमारे लिए करके देगा। ओके, दैट मीन्स तुम्हें खुद नहीं सोचना पड़ेगा कि ये यहाँ पे क्या चीज पुट करनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज पुट करूँ तो सही लगेगा, सही साउंड करेगा, या मुझे ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। रिक्रूटर्स अगर लिंक्डइन पे आके ढूंढ रहे होंगे किसी एक जॉब प्रोफाइल के लिए, तो क्या उन्हें मेरी प्रोफाइल वहां पे विजिबल होगी या नहीं होगी, वो सारी चीजें हमारे लिए AI सॉल्व करके दे देगा। हम लोगों को बस AI को बताना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी कि ये सारी चीजें हम हैं, और ये यहाँ पे हमने काम कर रखा है, अभी हम लोग करेंटली ये काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट। वो सारी चीजें बस हमें एक बार AI को बतानी होगी, उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग हमें AI बना के दे देगा। ओके, so banner, headline, okay, so profile photo is this, banner is this जिसको हम लोग ऑप्टिमाइज करने वाले, headline is this जो यहाँ पे नीचे लिखा रहे हैं ना, currently it is athlete, okay, we'll change it to a student who is studying at MUJ right now, okay, you can do it as per your own criteria, but I'm giving you an entire example कैसे तुम लोग अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। about section will come over here, okay, about section अभी added नहीं है, we'll be adding that about section as well। देन experience is over here, ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। स्किल्स तुम्हें क्या क्या आती है, क्या क्या तुमने सीख रखे है, वो सारी चीजें पुट करनी है। प्रोजेक्ट्स पुट करने हैं, क्या क्या तुमने बना रखे है, तुम टेक बैकग्राउंड से, मार्केटिंग बैकग्राउंड से, जिस भी बैकग्राउंड से हो वो तुम्हें यहाँ पे पुट करना है। फीचर्ड सेक्शन बेसिकली मीन्स आई शो यू माई प्रोफाइल एज वेल। Chirag Jain, if you will search for Chirag Jain Vycoats, you will get my profile. Although because मेरी profile काफी optimize हो रखी है, काफी search friendly है, so as soon as you search for Chirag Jain, you will get it on the top as well. Otherwise, you can search for Chirag Jain Vycoats and you'll get my profile over there. Okay, so basically this is a good profile photo that you're having. This is sort of a banner. I keep on changing it with time so that वो और धीरे धीरे optimize होता रहे and day by day better लगता रहे या weekly better लगता रहे. Okay, and this is the like bio that I'm having over here. This is the about section that you'll have over here. Okay, this is the featured section. There are some crazy posts that will be coming further as well. And these are the activities, these are the experiences, each and everything I've mentioned over here. So ये इस तरीके से तुम लोग अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, right? So that is what we'll be learning today, and how to network with people कि मैं अगर connection request भेज रहा हूँ उसमें क्या क्या चीजों का मुझे ध्यान रखना चाहिए। Okay, let's come to our profile again. And let's go ahead and let's start with the very first point, that is you're creating or accessing LinkedIn profile. To create a new LinkedIn profile, what you have to do is you just need to go to linkedin.com or just search for LinkedIn. Okay, click on this, the very first link. Either you can continue with Google or you can click on sign in with Gmail, and then just click on join now. And यहाँ पे अपना email ID, password डाल के तुम लोग यहाँ पे account create कर सकते हो। In my case, the new account has already been created, तो मैं just उसे log in करूँ। Very simple process, just तुम्हें email ID डालना है, अपना name डालना है, phone number डालना है आगे, and that's it. Some basic information it could ask, कुछ basic information वो पूछ सकता है, that's it. तुम लोग यहीं पे same dashboard पे आ जाओगे। तुम लोग you guys will be redirected to this dashboard, and after that you just need to go to this, click on this, and you'll be redirected to this, जहाँ पे तुम लोग एक्चुअल में अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो या चेंजेस कर सकते हो बेसिकली। ओके, सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू कि तुम लोगों को विजिट करना है linkedin.com. You will get all of these notes as well. Create account or login, open your profile dashboard. This is the profile dashboard. Okay, this is the profile dashboard that you're having. This is not the profile dashboard जो यहाँ पे शो होता है. This is just the home tab. Okay, and this is your profile dashboard that you're having over here. ठीक है, तुम लोग यहाँ पे व्यू प्रोफाइल क्लिक करोगे तो भी विल बी रीडायरेक्टेड टू द सेम थिंग ओवर हियर। ओके, व्हाई इट मैटर्स, योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज योर डिजिटल प्रोफेशनल आइडेंटिटी। आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती जा रही है, जैसे जैसे क्राइटेरिया, सिनारियोज, ईच एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग। विद टाइम क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ लाइक आस्किंग फॉर योर सीवी और अलोंग विद योर सीवी, a recruiter will always ask for your LinkedIn profile. LinkedIn profile is your sort of like your चलता फिरता CV. Okay, that means CV में आप तुम लोग कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हो, तुम लोग प्रोजेक्ट्स ओपनली नहीं दिखा सकते, मतलब वीडियोस नहीं पुट कर सकते हो उसमें एंड एवरीथिंग। तो तुम लिंक्डइन की प्रोफाइल वहां पे मेंशन कर दो। लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा, यू विल सी द एंटायर बायोडेटा अबाउट यू, राइट? कि इसने क्या प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, क्या काम कर रखे हैं, क्या इसका एक्सपीरियंस है,
कैसे कैसे ये चीज़ों को मैनेज करता है, या क्या क्या कौन से इवेंट्स में इसने पार्टिसिपेट कर रखा है, कौन सी हैकाथॉन्स जीत रखी है, कौन से कॉम्पिटिशन विन कर रखे हैं, या फिर किन क्लाइंट्स के लिए काम कर रखे हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी लिंक्डइन पे हमें मेंशन करनी चाहिए अपने पोस्टिंग में। उसी के बेसिस पे हम लोग एक रिक्रूटमेंट के लिए या फिर एक जॉब के लिए सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, सो इट्स ऑफन द फर्स्ट इंप्रेशन। एम्प्लॉयर्स, क्लाइंट्स, फ्रीलांसर्स के लिए भी यही है, बिजनेस ओनर्स के लिए भी यही है, राइट? एम्प्लॉयर्स, क्लाइंट्स एंड कोलैबोरेटर्स फॉर्म ऑफ यू। दैट मीन्स अगर मैंने किसी को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर की, उसका 50% से ज्यादा मन वहीं पे डिसाइड हो जाएगा क्या मुझे इस जने के साथ काम करना है या नहीं करना है। बिकॉज इट विल गो थ्रू माई प्रोफाइल, ये देखेगा ओके कहाँ कहाँ पे ये जा रखे है, ओके ही हैज बीन इनवाइटेड टू माइक्रोसॉफ्ट, ही हैज बीन इनवाइटेड टू द एआई समिट इन दिल्ली, एंड इसने इन क्लाइंट्स के लिए काम कर रखे, काफी टॉप क्रिएटर्स के साथ काम कर रखे। सो या ही इज अ जेन्युइन पर्सन एंड ही इज द फाउंडर ऑफ वाईकोड्स, तो मे बी मुझे इस पे ट्रस्ट करके काम करना चाहिए, बिकॉज वाईकोड्स इज ऑल्सो आईएसओ सर्टिफाइड एंड ऑल दैट। सो एक रिलायबिलिटी, ट्रस्ट फैक्टर वहीं से बिल्ड होना चालू हो जाता है। इससे पहले तुम लोग एक्चुअल में मे बी बात करना भी चालू करो। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट, उसने क्या काम कर रखे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, कितना उसकी सीजीपीए आ रही है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, वो सारी चीजें लिंक्डइन पे हमें पोस्ट करनी चाहिए, लिंक्डइन पे मेंशन करनी चाहिए। हम कौन से क्लब्स का पार्ट है, कौन से क्लब्स में क्या इवेंट हम लोग करवा रहे हैं, क्या क्या चीजें में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या विन कर रहे हैं हैकाथॉन्स को, कॉम्पिटिशन्स को, वो सारी चीजें हमें मेंशन करनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हमें एक अच्छा रिक्रूटमेंट मिल सकता है, या अच्छा जॉब मिल सकता है, या अच्छे फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। Okay, never fake your profile on LinkedIn. You should never fake your profile on LinkedIn. So make sure never to do that as well. Okay, and collaborators form of you. A well-optimized profile can open doors to opportunities you never imagined. ऐसे दरवाजे तुम्हारे लिए लिंक्डइन खोल सकता है जिसको तुमने कभी सोचा नहीं हो। सो दैट इज द पावर ऑफ लिंक्डइन दैट यू हैव। यू कैन कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम आईआईटीज, यू कैन कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम हार्वर्ड, different colleges, different universities. If you are a student, you can connect with founders of companies, top companies. You can outreach to them, उनको services sell कर सकते हो, उनको product sell कर सकते हो, right? So there's a lot of things. And तुम लोग अगर किसी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, एक अच्छा अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना लेते हो, तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या डिफरेंट सेमिनार्स के लिए तुम लोग इनवाइट भी किए जाते हो वाया लिंक्डइन। ओके, दैट मीन्स नॉट वाया द लिंक्डइन द कंपनी, बट लिंक्डइन के थ्रू तुम्हारे पास अप्रोचेस आने चालू हो जाते हैं डिफरेंट सेमिनार्स में, या फिर एज अ चीफ गेस्ट आने के लिए, एज अ स्पीकर आने के, डिफरेंट थिंग ऑलवेज हैपन। ओके, एंड तुम लोग क्लाइंट्स को भी रीच आउट कर सकते हो। अब ऑल दिस इज डिपेंडेंट ऑन कैसे तुम लोग अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हो, कैसे अपनी प्रोफाइल को बनाते हो। दैट मीन्स जैसे तुम इंटरव्यू में बैठते हो, तुम लोग अपने बारे में एक्सप्लेन करना चालू करते हो, तुम लोग अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हो, इंस्टेड ऑफ दैट एक लिंक्डइन पे तुमने पहले से ही वो सारी चीजें पुट कर दी, एंड तुम्हें कभी भी किसी को दिखाना हो या बताना हो, यू आर जस्ट सेइंग टू देम कि ओके जस्ट गो अहेड, check out my LinkedIn profile and you will get each and everything. Okay, take action now. Open your LinkedIn profile in a new tab before continuing. Okay, so new tab में हम लोगों ने LinkedIn profile यहाँ पे open कर लिया। Profile photo optimization. First thing, the very first thing is your photo. Okay, your profile photo creates the first impression. Professional होनी चाहिए, ऐसा नहीं तुम लोगों ने एक मिरर सेल्फी ले रखी है, या तुम पार्टी में गए थे, तुम्हें बहुत एस्थेटिक सी फोटो तुम लोगों की आई है, वो तुमने पुट कर दी। LinkedIn is not about that. You can post them on Instagram, वहाँ पे DP सेट करो, WhatsApp पे सेट करो, not on LinkedIn. LinkedIn is for professionals, right? जैसे तुम लोग अगर कंपनी में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, कॉर्पोरेट्स में जा रहे हो, राइट? तुम लोग अगर इफ यू आर as going as a job person, as an employee, as a boss, कुछ भी, ठीक है? तुम लोग किसी कंपनी में जा रहे हो, तुम लोग ऑब्वियसली वहाँ पे घर के कपड़े, दैट मीन्स जस्ट कैजुअल क्लोथ्स नहीं पहन के जाओगे कि टी शर्ट पुट की, जीन्स पुट की, एंड यूर जस्ट गोइंग देयर, राइट? यू विल बी गोइंग इन अ प्रोफेशनल अटायर, तुम लोग शर्ट पैंट में जाओगे, राइट, विद अ टाई और समथिंग लाइक दैट। सो ऐसे ही तुम लोगों की प्रोफाइल भी होना चाहिए, ठीक है? तुम लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल शुड बी ऑप्टिमाइज्ड इन दैट सेंस कि वो प्रोफेशनल लगनी चाहिए, नॉट जस्ट सिंपल तुम लोग की कोई अच्छी सी एस्थेटिक फोटो आई, अच्छे आउटफिट में फोटो थी, वो तुमने पोस्ट कर दी, वो तुमने पुट कर दी लिंक्डइन पे। नेवर डू दैट, ठीक है? बट क्या इसके लिए हमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाने की जरूरत है, या अलग से फोटो खिंचवाने की जरूरत है? नॉट एट ऑल। With the help of AI, you can do that same thing at no cost at your home. Okay, सो अभी वी विल बी सीइंग कि कैसे हम लोग अपनी जस्ट अभी की फोटो क्लिक करके, या जो भी हमारे पास पास्ट कोई अच्छी सी फोटो है, ठीक है, उसको लेके हम लोग कैसे एक प्रोफेशनल फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो योर प्रोफाइल फोटो क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ऑब्वियसली। सो सबसे पहला इंप्रेशन तुम्हारी फोटो ही क्रिएट करती है, दैट डिटरमाइंस वेयर द पीपल क्लिक टू लर्न मोर अबाउट यू। सो मेक इट काउंट, ऑलवेज मेक योर फोटो, प्रोफाइल फोटो स्टैंड आउट, मेक इट वेरी प्रोफेशनल, मेक इट लुक गुड, सो दैट लोगों को एक जेन्युइनिटी फील हो, एक क्रेडिबिलिटी फील हो, एंड दे लाइक सॉर्ट ऑफ फील लाइक कि ओके मुझे इस जर्नी के बारे में और जानना चाहिए।
क्लियर फेस विजिबिलिटी, फेस तुम्हारा दिखना चाहिए, एस्थेटिक नहीं है ऐसे कुछ करके तुम्हें नई फोटो पुट करनी है ऑन लिंक्डइन, दैट इज फॉर योर इंस्टाग्राम. Your face should be clearly visible with good lighting. Avoid sunglasses, hats, or anything that obscure your features. Okay. Professional clothing होनी चाहिए. Dress for the role you want, not the one you have. ठीक है. That means जिस role को तुम aim कर रहे हो, तुम लोग एक फाउंडर के रोल को एम कर रहे हो, तुम लोग एक सीईओ के रोल को एम कर रहे हो, तुम लोग एक जॉब सीकर या जिस भी रोल के लिए तुम लोग एम कर रहे हो, उस हिसाब से तुम लोगों की प्रोफाइल फोटो लगनी चाहिए. बिजनेस कैजुअल और इंडस्ट्री अप्रोप्रिएट अटायर वर्क्स द बेस्ट. Neutral background, choose simple background that don't distract, solid colors or blurred settings keep focus on you. Okay, that means अगर तुम लोग यहाँ पे background put कर रहे हो ना, ये एकदम plain होना चाहिए. या तो one thing solid color, that means white, black generally नहीं रखना चाहिए. White हो सकता है तुम लोगों का, sort of light blue हो सकता है, orange type हो सकता है, या तो एक solid color होना चाहिए. या तो second thing could be sort of background, अगर तुमने ऑफिस टाइप बैकग्राउंड पुट किया तो थोड़ा सा ब्लर होना चाहिए ताकि तुम्हारे मेन फोकस जो है वो तुम्हारे फेस पे है, ना कि बैकग्राउंड पे. समथिंग लाइक दिस. ओके, so this is how you can do these things as well. Next is high resolution image. Use sharp, professional, quality images. Blurry नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा फेस ब्लर हो रहा है या फिर पिक्सलेटेड हो रही है इमेज, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए. टूल्स यू कैन यूज, कैनवा से हम लोग बना सकते हैं, रेमिनी से बना सकते हैं, एआई हेडशॉट जनरेटर्स, डिफरेंट डिफरेंट काफी सारी एआई टूल्स है मार्केट में, बट वील बी यूजिंग अ वेरी क्रेजी टूल दैट इज वेरी फ्री टू यूज एज वेल, दैट इज Gemini for building up the profile photo and setting up the profile photo. Okay, so let's head over to Gemini for doing these things. So हम लोग आ जाते हैं Gemini पे. You can use ChatGPT for the same case as well, but Gemini would work better in this case. Gemini तुम्हें ज़्यादा better photos बना के देगा इस case में. Okay. Make sure to turn on this create image feature over here. You'll get this prompt as well. Okay. Otherwise, this is a very simple prompt that I'm putting over here. एआई के साथ जब भी तुम लोग कुछ भी प्रॉम्प्ट देना चालू करो ना, in this case you need not require that magic prompt formula that we discussed about. For that we'll be building our own custom gpt. You can build your own custom gpt or Gemini gem for that, जिससे तुम लोग हमेशा इस चीज को किसी और पे भी यूज करवा सको, या लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजर बना के तुम लोग एक जीपीटी आगे सेल भी कर सको टू योर क्लाइंट्स, टू स्टूडेंट्स हु वांट टू ऑप्टिमाइज देयर लिंक्डइन प्रोफाइल. यू कैन डू दैट, राइट? दिस इज हाउ यू मेक मनी फ्रॉम एआई. द थिंग्स जो तुम लोग इस पूरे कोर्स में सीख रहे हो, उसके बेसिस पे तुम लोग हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टरी कोर्स में तुम लोग जो चीजें सीखोगे, उसके बेसिस पे तुम लोग कैसे पैसे कमा सकते हो, हर एक पॉइंट से तुम पैसे कमा सकते हो, राइट? यू आर बिल्डिंग दिस कस्टम जीपीटी, कस्टम जेमिनी, जो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके दे दे, मुझे बस उसको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है. हाउ क्रेजी इज दैट, राइट? उसके लिए आई विल बी एबल टू पे, आई विल बी वेरी विलिंग टू पे. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो उसके लिए पे करेंगे, राइट? बिजनेस ओनर्स है जो पे करेंगे, जिनको लिंक्डइन की ज्यादा प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, वो लोग पे करेंगे, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन बिल्ड एंड यू कैन सेल आउट एज वेल. ओके, सो अभी वील बी पुटिंग अ सिंपल प्रॉम्प्ट. एआई के साथ जब भी तुम बात करो, तुम्हें कुछ भी काम करवाना है, ऑलवेज मेक श्योर जैसे तुम लोग किसी एक दोस्त को बता रहे हो या एक ग्राफिक डिजाइनर को बता रहे हो, ये काम मुझे चाहिए, ये चीजें तुम्हें करके देनी है, एंड इट विल डू इट फॉर यू. ओके, इतना सिंपल तुम लोग रख सकते हो चीजों को. हमेशा कॉम्प्लेक्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या हमेशा मैजिक प्रॉम्प्ट फॉर्मूला को यूज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग ओवर हियर. अब नाउ लेट्स गो हेड. Let me click a photo of mine. Okay, I'll just open. Okay. Just go ahead and I'll click a photo of mine right away. Okay. So here I've got my photo. Okay, I'll just drag and drop it over here. And अब the main thing start कि हम लोगों को यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, किस टाइप से हम लोग फोटो दिखाना चाहते हैं. अब तुम लोगों के पास कोई भी एक नॉर्मल तुम्हारी इमेज है, सेल्फी है, एनीथिंग दैट यू आर हैविंग, उसको तुम लोगों को यहाँ पे पुट करना है. दैट्स इट. ओके, अभी मैं तुम लोगों को लाइव फोटो के साथ दिखा रहा हूँ कैसे तुम लोग इसमें चेंज कर सकते हो. सो आई वॉन्ट टू क्रिएट और turn this photo into a LinkedIn professional image. LinkedIn professional, I'll put profile photo. Okay, profile photo. I want it to, okay, I want you to create a new image when I am shown in a professional attire that includes a dark blue blazer or a professional. Okay, let's keep professional attire. Let's see what it gives. And that I'll also mention that you can use these sort of color combinations or something that you can go about. Okay, professional attire and a solid color in the background. It should be a proper professional
photo. Okay, make sure to match the exact same facial features and hairstyle. Don't don't modify the facial features and enable facial face resemblance, or take care of face resemblance, something like that you can do. Okay, let's go ahead, let's click enter, let's see what it gives. Okay, it will analyze a bit and it will just go ahead, it will create a very good professional photo for me as well. Okay, let's see what it gives. After that, what we'll be doing is we'll be uploading that photo over here. Okay, I'll change the name to let's see maybe Karthik Kumar, let me keep it. Okay, this is just a dummy account that I'm showing to you to actually see or to actually explain कि कैसे तुम लोग अपनी खुद की प्रोफाइल बना सकते हैं and everything. Okay. After this, we'll be going ahead. We'll be creating a professional banner. Okay, professional banner in the background. For that, we need to go to Canva. Okay. ये तुम लोग AI के थ्रू भी बना सकते हो, बट कैनवा पे तुम्हें काफी अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, काफी बेटर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, एंड इसमें एक दो चेंजेस तुम्हें करने पड़ेंगे, एंड यू आर गुड टू गो विद दैट. ओके, लिंक्डइन banner. That's it. Just search for this. You're getting a pretty good banners. ठीक है, तुम लोगों ने ये काफी सारे banners लोगों की प्रोफाइल पे देख रखे होंगे, right? There are a lot of people, काफी लोग यहाँ से बना के put करते हैं. So you can go ahead, you can use this as well. Otherwise, you can use AI to generate the banner for that as well. Okay, so it's just going ahead. Let me choose any of these, whichever you like. Go ahead with using them. Okay, maybe I can go ahead with this. I can go ahead with this, whichever you like. For now, I'm going ahead with this. This is completely free to use. कुछ भी तुम्हें pay नहीं करना है इसके लिए. Okay, so I'll change the name to, just double click on it. I'll change the name to Karthik Kumar. Now, these sort of fancy things doesn't look good on LinkedIn. Okay, so make sure to change the font to something just normal, not like fancy or designer sort of like that as well. If you are a content creator or someone, उसके हिसाब से तुम लोग अपनी प्रोफाइल का बना रहे हो, तो उसके हिसाब से you can optimize it, you can change it as well if you want. Okay, so I'll just put it over here so that ये properly दिखे. Graphic designer की जगह I can put student as well. Okay, because I'm making it for a student who is studying at MUJ. Okay, and here you need to mention the Gmail address. Okay, Karthik @gmail.com. We can mention करें so that people can reach out to you if needed. Okay, I'll just drag it over here. And student and Karthik@gmail.com. You can even mention some more things like student and entrepreneur if you're running your own startup, and freelancer you can put if you want to do freelancing and stuff like that. So you can put all of these things over here and just click on share. Okay, that is shown at the top. Click on download, click on PNG and click on download. That's it. Okay, as simple as that. And ये तुम लोगों का LinkedIn banner रह गया. Okay, and let's see what photo it gives to you. So this is the photo it has given. Now you'll see थोड़ा सा इसमें प्रोफाइल फोटो जो है जो फेस है उसको थोड़ा सा मैच कम किया है. So now the second thing that you need to do is make sure to match the face. Don't modify the facial shape and structure, and just put a subtle smile. You can mention without showing teeth. Okay, just a normal smile. Okay. Now, because I don't personally like this blazer, it is looking very simple. So I'll mention, make it a rich blazer, rich professional blazer. Okay, or coat, anything you can mention, and a white shirt and tie, and show me standing and posing in an office background, and the background should be a bit blurry, putting more focus on my face. Okay, I could have copy pasted the prompt जो मैंने पहले put किए थे, but I wanted to show you कि कैसे तुम लोग actual में जा सकते हो. ठीक है, copy paste करके हमेशा तुम लोग prompts put कर लोगे, but कैसे think करना है, कैसे ये put करना है, क्या क्या issues तुम face कर सकते हो अगर नहीं match हो रही है face या फिर नई चीजें match हो रही है. So how can you go about
that how can you go about those things. इसलिए मैंने ये सारी चीजें तुम्हें करके दिखाई है, मैनुअली मैं यहाँ पे टाइप करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड, बिकॉज जब तुम लोग खुद इन चीजों को बनाओगे यू विल फेस इश्यूज, ठीक है, तुम लोगों को दिक्कतें आ सकती है। ओके, सो उन दिक्कतों से भी कैसे रिकवर करना है, दैट इज व्हाट यू आर हैविंग ओवर हियर। सो इफ यू वॉच दिस इन आवर वर्कशॉप यू वोंट बी फेसिंग एनी इश्यूज later on ourselves. Okay, so and white shirt and tie show me standing and posing in an office background, and the background should be a bit blurry. Okay, let's go ahead. You can obviously do it 2 or 3 times जब तक तुम लोगों को जो actual photo तुम्हें चाहिए वो नहीं मिले. Okay, you can go ahead with that as well. Okay, so meanwhile we can go ahead and we can upload our banner that we have generated. Let's go ahead. Let's click on this. Also, तुम लोगों को काफी सारे banners यहाँ पे by default मिल जाएंगे. If you want to choose any of these, you can choose any of these as well. Otherwise, I'll upload it over here. Okay. So upload a single photo. This is the one that I'm having. And ये दिखा रहा है कि कौन से एरिया को तुम्हें लेना है. I want to take this. Save changes. And this is what we have got over here. Okay, अभी it will take a while to upload and उसके बाद it will be uploaded over here. So this is looking pretty good. ठीक है, काफी weak सा लग रहा था पहले, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे. Okay, अब ये credibility बढ़ाएगा कि ये कोई fake account नहीं है, कोई like sort of dummy account नहीं है. This is a genuine account, something like that. तो इसलिए तुम्हें अपनी प्रोफाइल को optimize हमेशा करना चाहिए. Okay, that is something that you need to remember. Okay. Now let's see what image it has given to us. Okay, this is the image sort of better than before, but it has changed the hairstyle sort of. Okay, so I'll put give me a professional hairstyle and put a glow on my face. Okay, something like this. So let's see how it goes. You can change your hairstyle. You can put a glow on your face. तुम लोग इसको और थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो if you want to make it even more better or make profile something like this. जैसे मैंने अपनी image create कराई थी पहले. I'll show you that as well कि तुम लोग कैसे इस टाइप की image create करवा सकते हो and तुम लोग अपनी प्रोफाइल को और अच्छा good looking कैसे sort of बना सकते हो. Okay, so you can go about that as well if you want. Meanwhile, let's do more things. Okay, so step 3 is creating a professional banner. Now, let's say if you want to create a professional banner using AI or something like that. Okay, so it has given me this, and I'll mention skin tone should be a bit white and give me and the background a rich look and modern style. Okay, and rich outfit and just mention okay luxurious environment. Okay, something like that. If you make spelling mistakes, it's fine. It will understand. I want to make a LinkedIn banner. Okay, let's say you want to check कि LinkedIn banner का size क्या होता है. LinkedIn banner size. Okay, so it is somewhat 4:1 ratio में होता है. Okay, so you can go ahead. You can mention 4:1 ratio over here. LinkedIn banner 4:1 ratio. Give it a modern yet simple, elegant tech environment or tech style. Mention the name Karthik Kumar and you can mention email ID. Email ID Karthik @gmail.com and mention a small headline as student and freelancer, something like that. Okay, I want you to create a very professional and rich visuals banner. Okay, make sure to turn on create image over here. Although अगर तुम लोग नहीं भी करोगे तो it will create an image for you, but it is always suggested कि तुम लोग ये image वाला mode on कर दो, इसमें तुम्हें better outputs हमेशा मिलेंगे. Okay, so let's see. It has given me this thing over here. Now you can go ahead. You can match your photo more if needed. Okay, you can put more glow on your face if needed. Okay, let's say I want कि okay, optimize this photo to improve my skin tone and make it look even better and a model type face sort of. Okay,
So this is the banner that it has generated. Karthik Kumar, Karthik at the rate of gmail.com, student and freelancer. A pretty good background. ठीक है, अभी हम लोगों ने ये update किया. You can put this as well. Okay. The one which is on my profile is AI generated. So you can use that as well. Okay. So these are the things that you're having that you can do and utilize. Let's move on to the next step, meanwhile. Okay. Understanding LinkedIn headlines. Most people write weak headlines that fail to capture attention. अब तुम लोगों की प्रोफाइल ने तो या प्रोफाइल फोटो ने तो attention grab कर लिया, but next thing is कि तुम लोगों को एक अच्छा सा like अटेंशन कैप्चरिंग बायो भी चाहिए या लिंक्डइन भी चाहिए, तुम्हें हेडलाइन भी चाहिए लिंक्डइन पे, सो दैट यू कैन कैप्चर मोर अटेंशन एंड तुम लोग बता सको कि तुम लोग एक्चुअली किस चीज के लिए स्टैंड करते हो. ओके, देयर इज वन मोर ट्रिक दैट आई विल टेल यू कि अगर तुम लोगों को यहाँ पे इमेज जनरेशन में कभी दिक्कत आया या तुम लोग को बार बार प्रॉम्प्ट करना पड़ रहा है और समथिंग लाइक दैट, व्हाट आई यूजुअली डू इज और व्हाट यू शुड डू इज go to ChatGPT and tell it, I want to generate an image using Gemini Nano Banana. So I want you to refine the above prompt and give me the updated prompt in a code block. Okay, code block इसलिए so that हम लोग directly copy paste कर सके. Okay, I will provide my image as a reference to Gemini. Okay, so it will understand and it will give you a better prompt that you can put. So तुम लोगों को prompt भी नहीं सोचना पड़ेगा क्या तुम लोगों को put करना चाहिए. And you can just go ahead, you can copy this and you can paste this prompt on your Gemini model over here. Okay. So let's see what it creates. And after that, what we'll do is we'll paste this prompt. Okay. सो द नेक्स्ट थिंग इज तुम लोगों को यहाँ पे एक हेडलाइन, अच्छी सी हेडलाइन लिखनी चाहिए. अब एथलीट दिख के किसी को क्या ही समझ आ रहा है, एंड इसको हम लोग एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कन्वर्ट करेंगे. सो मोस्ट पीपल राइट वीक हेडलाइंस. अगर तुम लोगों की हेडलाइन जो है वो अटेंटिव नहीं है, वो आई कैची नहीं है, तो तुम लोग कहीं ना कहीं अटेंशन ग्रैब करने में फेल हो जाओगे. डोंट मेक दिस मिस्टेक. योर हेडलाइन अपीयर्स एवरीवेयर, योर नेम डज. ओके, जहाँ जहाँ तुम्हारा नेम दिखता है वहाँ वहाँ तुम्हारी हेडलाइन दिखती है. ओके, so for example, if I search for Chirag Jain, you'll see over here, right? You'll see the headline over here as well. सब में headline यहाँ पे show हो रही है. Okay, so don't make this mistake. Your headline appears everywhere. Your name does. Network feeds, search results, connection request, हर जगह तुम्हारी headline visible होगी. Weak headline क्या हुई? Student at Manipal University Jaipur. Strong headline क्या हुई? Role तुम लोगों ने मेंशन किया, तुम लोगों ने स्किल्स मेंशन की, एंड क्या वैल्यू तुम लोग किसी की लाइफ में ऐड कर सकते हो वो चीजें तुमने मेंशन की. Communicates who you are and what you offer. Examples of powerful headline: digital marketing specialist के लिए क्या हो सकती है? Meta ads expert helping brands grow online. सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए क्या हो सकती है? पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट. पहले स्किल्स मेंशन कर दी, कौन सी लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज में वो कोड करता है. बिल्डिंग स्केलेबल सॉल्यूशंस. प्रोजेक्ट मैनेजर, एजाइल सर्टिफाइड और एगाइल सर्टिफाइड, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस दैट, delivering projects on time. Notice how each headline combines your role, key skills, and value proposition. This formula creates immediate clarity about what you do and why someone should contact you. Okay. Generating headlines. Let's go ahead and let's generate headlines. Now we'll use AI to generate these headlines. Open ChatGPT. ChatGPT would be better. Okay, in this case, launch your preferred AI assistant. Enter your prompt. Okay, sample prompt is this that we are having. Okay. So I'll just go ahead. I'll go to Gemini. It has generated this image. So I'll just do one thing. I'll copy this. I'll copy this and I'll go to a new chat and I'll use this image that I'm having over here. Okay. I'll paste this image over here and I'll paste this prompt and I'll click on create image. And fast ki jagah, I'll click on pro and click on enter. Okay. Meanwhile, we'll go ahead, we'll open a new chat and सबसे पहले ना, to make your profile more optimized, to make it the best, make sure to provide all information that you have about yourself. Okay, so सारी information बता दो. Okay, so hi, I'm Karthik Kumar and okay, I'm Chirag Jain by the way. अभी Karthik Kumar के नाम से I'm creating this profile, right? So I'll just go ahead and I'll create a new profile. Hey, I'm Karthik Kumar, and I want to optimize my LinkedIn profile. So I'm telling you all the information about myself. If you need more information, feel free to ask me about that, and then I'll tell you what to optimize and properly give me suggestions to optimize it and how can I go about optimizing things. So I'm currently a third year BTech Computer Science Engineering with specialization in AI and ML at Manipal University Jaipur. And I'm looking for job opportunities as an AI generalist role because I'm currently doing the prompt engineering mastery course from Vycodes. And
I have a deeper understanding of how to generate content using AI, how to use AI tools, which AI tool is best for certain use cases, and for different perspectives, how we can use LLMs, how we can build our own LLMs, and how we can use AI to generate music, and many more stuff as well. Okay, so apart from that, I have a deeper understanding of Python coding. I know how to code in Java. I have a deeper understanding of data structures and algorithms. So I'm focusing on two things mainly. I'm focusing one on grabbing a good job at an MNC company, at a tech company like Google, Microsoft, or something. And secondly, I'm looking forward to approach clients for freelancing so that I can earn money as well. Okay, so this is the entire information that I have. Apart from that, I won two hackathons in my past. I'm a part of two clubs at my college. One is Cosmos, and another one is Aperture. Okay, uh, there are three clubs that I'm a part of. The third one is IEEE. So I've also done a lot of events. I've been the head of those events, and I'm having a CGPA of 9.5 right now. So this is the entire information about me. Okay, so I mentioned some information over here. Okay, तुम लोग अपने हिसाब से information mention करोगे obviously. Okay, this is not the exact information that you need to put. तुम लोग अपने हिसाब से information put करो. And that is what you need to do over here. And make sure to turn the thinking mode on over here so that कि तुम्हारी information को अच्छे से समझ पाए. Okay. It has taken Lathik Kumar, it's Karthik Kumar. So that is why you should use Whisper Flow over here instead of using the built-in dictate mode of ChatGPT. Okay. So I'll just change this name for a second. I'll change it to Karthik Kumar. And let's put this again. Okay. Meanwhile, I'll go to Gemini. I'll see. This is the photo that it has given me. A pretty good photo, right? A pretty better photo than the ones we were doing earlier to this. I'll download this and I'll put this ahead. Okay. So I'll upload it. Make sure always you can improvise it if needed. You can put you do not put any marks on my face. You can improvise it. You can put skin smoothening on your face as well. So because my actual face doesn't have any marks on it or something like that, you can do that as well. Okay. For now, I'm considering this image. You can go ahead and you can create your own professional images as well. Make sure to check out the notes section as well. In that, you'll be getting a lot of more prompts. You'll be getting a lot of more, like complete prompt workbook that you can use to create exactly images that I do. Okay, जैसे मैं images अपनी बनाता हूँ वो images हम लोग create कर सकते हो because those are some predefined steps of prompts जो हम लोगों ने पहले use कर रखे हैं to create our own profiles. अपने clients की profiles के लिए भी हम लोग वो prompts का use करते हैं. So you'll get a free like a prompt book over there as well. Okay, I'll just update this. I click on update. Now we need to upload an image over here. I'll upload this image. Okay. So this is the image that I've got. A pretty good image. अब इसके लिए मुझे एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जाना पड़ता है, एक ऑफिस में जाना पड़ता, ठीक है, वहां पे जाके फोटो खिंचवानी पड़ती या फिर एक प्रोफेशनल अटायर में जाना पड़ता. नहीं रिक्वायर्ड है, घर बैठे बैठे ये इमेज तुम्हारी क्रिएट हो गई है. ओके, सो इट विल टेक अ व्हाइल, इट विल सेव दिस इमेज. लेट्स कम बैक टू दिस. ठीक है, इट हैज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. AI generalist, prompt engineering, Python and LLM applications, hackathon winner, BTech CSE, AI and ML at the rate Manipal University, Jaipur, building AI solutions. It has given you the things that you are building. Okay, so I'll do one thing. I'll copy this prompt that we have given to you. Okay, and we'll just optimize it a bit. Generate 10 professional LinkedIn headlines for me. Okay, um, for me, and that's it. Include keywords and showcase include keywords that will appeal to tech recruiters and clients and showcase technical skills. Something like this you can go about. Okay. AI generalist, prompt engineering, Python developer, LLM applications, hackathon winner, BTech CSE, AML at the rate MHA. Okay, so this is a better thing. This is a better bio that you can go ahead. Again, building AI solutions, exploring generative AI solutions, building practical AI applications, open to roles and freelance projects. So you can mention the one which you like. According to me, there's this 10th one that sounds out to be good. And there's this ninth one that sounds out to be good. Okay, so I'll go ahead with the 10 one because it has more information. I'll click on this edit intro. Okay, basic name you're having over here. Okay, I'll change it to for now. I'll change it to my name. Okay, or let's keep it as it is. Additional name, if you want to mention any nickname or something like that, you can mention that over here as well. Headline. This is the thing that you need to change. Okay.
And pronouns में you can put he or him if you are male, she or her if you are female. Okay, so let's go ahead with this. And all LinkedIn members, you can click on this, who can see your pronouns, current position, all of this will be optimizing further. Click on see, and this is what you have got over here. Okay, so it will update it in a while. You just need to reload it once, and this is what you have got over here. Okay, so pretty good, pretty very much better than before. Okay, so let's move on to the next step now, the headline part as well. Writing the about section. Okay, so about section tells your professional story in a narrative format. This is where you connect with readers emotionally while showcasing professional value. Keep it concise yet compelling. Aim for short, 3 to 5 short paragraphs. Okay, there's one more thing. Let's say you are personally inspired by the profile that I have. You can even go ahead. You can take screenshot. Okay, it's like bio I want, or it's way may I want to put the entire information or entire about section about me and everything. So you can go about that as well. Okay, you can take a screenshot and you can even pass it to Gemini or ChatGPT, and you can say, okay, use it as a reference and uski basis pe provide the things to me. Okay, so now let's go ahead and let's do one thing. Let's add a good bio over here. Okay. So additional name, pronouns, current position, we'll add that later on. Let me change the location to Jaipur for now. Okay, save, add section. Okay, now click on add about. And here you can mention the entire information that you want to. So introduction होना चाहिए, skills and expertise होनी चाहिए, achievement and experience होना चाहिए, career goals होने चाहिए, and call to action. Each and everything should be mentioned. So I'll just take a screenshot of this. I'll put it on ChatGPT and I'll tell use the points given and generate a professional, eye-catchy uh, about for me. Okay, so it will analyze and it will create the thing that you can write in your about section. This is also a sample prompt that you can use. Write a professional LinkedIn about section for student professional who is interested in या पे skills तुम्हें mention करनी है. Include strength, interest, and career goals. Use a professional tone and achievements and highlight achievements and value proposition. Okay, so you can even copy paste this prompt if needed instead of clicking the screenshot. Okay, ask AI to generate 2 to 3 different versions, then combine the best elements from each for a truly customized about section. Okay, so this is the entire thing that you're having. So इसने काफी अच्छा सा यहाँ पे description generate करके दे दिया. I'm a BTech CSE student in AI and ML studying at so and so university. And it has mentioned the entire student perspective of yours. It has mentioned क्या क्या चीजें तुमने सीखी है and each and everything. Okay. Alongside academics, I've participated and won 2 hackathons. I'm also involved in this. Currently, I'm focusing on this. Okay. Mention the prompt engineering mastery those I completed from Whitecoats as well. Okay, you can put this as well. It will give you another variation of the same thing. After this, our next step would be after this experiences section. Okay, optimizing your experiences section of what you can put in your experience section. That is something that we need to pay attention to after doing this. Okay. So weak examples for the that would be worked as intern. अब तुम लोगों ने कहीं पे internship किया. So you need to properly mention कि तुमने क्या क्या चीजें की है, क्या क्या काम किया तुमने वहाँ पे, and क्या उसका result आया, क्या उसका outcome आया. Just mentioning worked as an intern is very weak. Okay, वो सारे लोग mention करते हैं, but you need to stand out over there as well. Okay. Handle marketing task. अब marketing task में तुमने क्या काम किया है, वो चीजें भी तुम्हें mention करनी चाहिए. Most people write weak experience descriptions like worked as intern, handled marketing task. Instead, you should show impact and results, right? कि तुम लोगों ने क्या impact वहाँ पे put किया था अपनी internship में, क्या results आए थे कि तुम लोगों ने as an intern वहाँ पे काम किया था, तो उस company को कैसे benefit हुआ था. That is how आगे तुम्हारी companies या clients तुम पे like credibility ensure करके या तुम्हारे पे trust ensure करके तुम्हें अपने team में consider कर सकते हैं. Okay? Make it visually clear that impact and results matter. Strong examples would be digital marketing intern, okay, managed Facebook ad campaign, increased engagement by 80%, created social media strategies. This is a very good example of how you should mention your experience section. Okay, so it has given you this entire information. Okay, you can do this as well. Give 3 variations. Let's say you need 3 variations and give them in a code block. Okay,
So it will give you three variations and it will give you in a code block so that तुम लोगों को drag करके select करके copy paste ना करना पड़े. You can just go ahead and you can directly copy and paste these things. Okay. So it is giving you this entire information. Variation 2 is what you're having over here. Again, now there's one thing that you need to mention in three separate code blocks. Okay. Otherwise, तीनों variations तुम्हें एक ही code block में मिल जाएंगे. That won't be good. So here's the first variation that I'm having. Alongside my academic journey, I've participated. My goal is to build a career as AI generalist. And second is this, as a CSE student, specializing my interest lie in this. Okay, this sounds to be better. This sounds like you are talking to the person. Okay, this sort of a bit stands like bragging and stuff. I'll just paste this over here. Okay, अब इसमें make sure to go ahead and optimize these things. इसे paragraphs में divide कर दो. And I welcome opportunities to collaborate, learn, and contribute to projects that drive. So that is a pretty good thing. Now the next thing would be you can add your skills as well. That we'll be adding later on. Just save it, and now go ahead and reload it. So this is what you are getting over here. Now एक अच्छा सा banner profile photo headline is set up. This is your entire about section that you're having. A pretty good thing that you're having. Okay, अब इससे तुम्हारी visibility increase होनी चालू हो जाएगी. ठीक है, तुम लोग actual में convey कर पा रहे हो what you actually know and what you actually are. Okay, experiences section. अब experiences section में जाते हैं. Let's put. Okay, so for experiences section, just take a screenshot of this entire thing and put help me put all the relevant experiences one by one over here. Okay. So on the basis of information जो तुमने इसे provide की थी, on the basis of that, ChatGPT will optimize and give you entire things that it has given you that you have done. Okay, and उसके basis पे वो सारी चीजें यहाँ पे put कर देगा. Let's say you were a prompt engineering trainee at Codes. Okay, AI and generative AI researcher, self projects, event lead, IEEE, technical member, Cosmos Club. Okay, technical member, Aperture it is actually. Okay, hackathon participant and winner. Okay, so these are the things that you can put over here. So I'll be going ahead with this. Yeah, and generative AI researcher. I'll mention it over here. Employment type would be self-employed or freelance. You can put over here. Okay. So there won't be any company or organization. It would be self. Next would be self-employed. You can put over here. Okay. And location would be remote. Here's your location. It would be remote over here. Okay. If you want, you can mention when you started it. Let's say I'm putting it 2024, and location would be Jaipur over here. Next is description. So it has provided you the entire description. Make sure to put it over here. This is the profile headline that you're obviously having. Where did you find this job? You can avoid it. And if you want to attach your certificates, relevant projects, or any images, documents, or PDFs, make sure to add it in the media section. Skills. Okay, it might have given you skills. Okay, so let me tell it. For each role, give me relevant skills to be added. Okay, so you're having generative AI, LLMs, prompt engineering, all of these things that you're having over here. Make sure एक skill तुम लोग यहाँ से copy करके paste करते जाओ. The ones which you are finding to be relevant. Okay, generative AI. Click on see. You should at least have 10 skills on your entire LinkedIn profile. At least 10 हो सकती है. ज़्यादा तुम लोग कितनी भी put कर सकते हो. Okay, let's go ahead. Let's reload this. Similarly, I'll go ahead and मैं एक एक करके ये सारी चीजें put कर लूँगा. Okay. So AI and generative researcher, generative AI, and everything you are having over here. Okay. Next would be, let's say you are interning at Codes as well. Okay. So you can mention that as well. Prompt engineering training at Codes. Okay. So I'll go ahead. Experience section, add position, and you'll mention over here prompt engineering training. अब let's say if you want to inform your network जो है तुम लोगों का connections जो है उनको तुम लोग इन्फॉर्म करना चाहते हो तुम लोग कोई भी न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हो न्यू चीज ऐड कर रहे हो तो यू कैन टर्न दिस ऑन इससे नोटिफिकेशन चली जाएगी इन लोगों के पास कि ओके चिराग इज वर्किंग एज सो कंपनी और चिराग इज डूइंग दीस एंड दीस थिंग्स अदरवाइज इफ यू टर्न इट ऑफ जो भी तुम लोग ऐड करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन नहीं चाहिए ओके लेट्स से यू आर वर्किंग एज अ पार्ट टाइम रोल
let's say you are working as a full-time role. Okay, your if you were an intern, you can mention part-time or full-time, whatever you want to. Employment type would be training or internship. Okay, so employment type would be internship over here. Company or organization, you can put Y quotes over here. So here's the Y quotes, the company. And current position as of now, AI generated self project. Month, you started, let's say it in February of 2025, and your internship, let's say, ended. It was a 6 months internship or something. Let's say it ended in 1, 2, 3, 4, 5, or 6 or something. Let's say, let's choose August of 2025. Location was Jaipur, and location type was, it was on site. And here's the description that you have got. You can put this over here and click on save. Okay, similarly, सारी चीजें एक एक करके तुम्हें यहाँ पे पुट ऑन करती जानी है. If you click on this, okay, you can choose कि तुम लोगों को किसी चीज को edit करना है, तुम लोगों को किसी चीज को add करना है या remove करना है. You can do all of these things, right? So this is what you're having. अब काफी optimized तुम लोगों की प्रोफाइल यहाँ पे लगनी चालू हो चुकी है. You're having the experiences section. Okay, make sure यहाँ पे जो प्रोफाइल लैंग्वेज है उसको तुम्हें अगर चेंज करना हो तुम लोग वो भी चेंज कर सकते हैं. And public profile and URL. These are some extra things that I'm telling you. Okay, so if you click on this over here, you can go ahead and you can like optimize your profile कि तुम लोगों को ऐसे कार्तिक कुमार B0505 नहीं रखना है. तुम लोगों को कार्तिक कुमार let's say की something like that रखना है और कार्तिक रखना है. Okay, it will make your LinkedIn like URL stand out as well. वो कोई random URL नहीं लगेगा. If you go to my profile, right, you will see कि वहाँ पे properly ये चीज optimized है. It is not some random thing out there as well. Okay, so if you go to this, you will see it is not a random thing over here. It is Chirag Jain CJ over here. So this is the profile that you're having, right? So it is looking very optimized over here as well. Okay. So let's go ahead and let's do rest of the things. Our next step would be make sure एक एक करके तुम लोग इन चीजों को put करो. Okay. This was just to inform you कि how you can go about these things and you can put these things over here. Okay. Experiences section is done. The AI prompt to use. You can rewrite your internship experience. अगर तुम लोगों ने कोई already put कर रखी है कोई information, make sure to take a screenshot of that thing कि तुम लोग इसका screenshot लो and then go ahead and then put कि okay you want to rewrite this internship experience in LinkedIn professional tone. Okay, something like that. So इस prompt को तुम use कर सकते हो if you want to rewrite things. I'm currently telling कि let's say तुम्हारा कुछ भी added नहीं है, तुम लोगों को scratch से profile बनानी है advanced level तक. That is what I'm telling you right now. Okay. Next thing would be skills optimization. Okay, skills को optimize करना है. Add industry relevant skills. Ensure your skills directly relate to your target roles. Prioritize top skills. Use keyword based skills. ठीक है. Python, SEO, digital marketing, keywords use करने चाहिए तुम्हें. Okay. Randomly चीजों को नहीं put करना चाहिए. Okay, you can go ahead and you can add skills. So let's say you want to maybe go ahead with give me 50 skills, give me 10 skills. I'm doing for 50 skills. You can go up till 50 skills maximum. Okay, so I'm going for let's say 5 skills. Give me top 5 skills, keyword optimized skills for better visibility of my profile that I can add on my LinkedIn skills section, something like that. Okay, so it will give you some 5 skills that you can put over here. Okay. Next thing would be live AI demo, generating the skills, launch your AI assistant, enter the specific prompt, generate 30 important LinkedIn skills for you, for me. Okay, do that so that तुम लोगों के हिसाब से ये चीजें generate हो जाए. Okay, so these are the things. Artificial intelligence. This is one of the most search keywords. So I'll go ahead. I'll put this over here. Artificial intelligence and save. Okay, अब इसमें तुम mention कर सकते हो कि कहाँ पे तुमने ये skill को सीखा है. So you can do that as well. Okay. So यहाँ पे ये चीज mention हो जाएगी. Okay, you acquired the skill at this moment. Okay, generative AI, prompt engineering, LLM, Python, एक एक करके तुम सारी skills को यहाँ पे add on कर सकते हो. Okay, adding projects, websites तुम add कर सकते हो, AI project add कर सकते हो, marketing campaigns जो तुमने run किए थे उनको add कर सकते हो, अपना portfolio add कर सकते हो, video editing का work तुम लोग यहाँ पे add कर सकते हो. Okay, so let's say I'm going ahead, going to the project section over here, add project. Okay, so project name, let's say Karthik during his internship helped us in our client's work as well. So AI generated vlogs, let's say AI generated vlogs. This is something that he helped us in. And okay, you can mention the description. Again, तुम लोगों को सोचने की requirement नहीं है. तुम लोग यहाँ पे chat GPT को use करके कर सकते हो. So I'll show you the entire thing. Images,
documents, sites, or presentations. Okay, I'm currently working on this project. You can turn this off. Okay, if you turn this on, तुम लोग mention कर सकते हो कि कितना लंबा प्रोजेक्ट था, क्या क्या चीजें तुमने की है, contributors को तुम लोग ऐड कर सकते हो. ठीक है. So let's say I want to add my profile over here. You can add that as well. Associated with कहाँ पे तुमने काम किया था during your internship. Okay, let's say you generated AI vlogs. Okay, so I'll just paste this, copy this entire thing, and I'll put this over here. I generated AI vlogs for uh, for Wycoot's clients during my internship, something like that. Okay, so it will help you analyze and put relevant information over here as well. Okay, for now, what I'll do is I'll go to media section. I'll add a link. ठीक है, तुम लोग यहाँ पे image कुछ भी डाल सकते हो, and I'll go ahead and I'll do one thing. I'll put Wycoot's की link over here. Okay, if needed. Otherwise, I'll add the relevant project that we done for one of our clients. I'll go to YouTube. I'll go to the channel SPCC, and he's one of our clients जिनके लिए हम लोगों ने काम किया है. Okay, he's having 10 lakh subscribers on YouTube. Okay, I'll take one video of theirs जो हम लोगों ने generate की थी. Okay, let me take this video. ये हम लोगों ने complete generate किया for our client. Our entire team has done that. I've personally played the entire role of generating this entire video. So that is why I'm the perfect candidate to teach you all of these things as well. I can click on add. So ये title, description सारी चीजें पूछेगा. AI. Okay, I'll choose the description from here. Okay, so I can mention कि कैसे कैसे ये video generate हुई थी. Each and everything I can mention as well if needed. Okay, and I'll do one thing. The enemy block, class 12 English, one shot boards. Okay, I'll put this over here. And description, I'll copy it from here. Thumbnail, I can choose from YouTube or I can upload it if needed. Okay, so I'll do one thing. I'll go to this. I'll go to inspect. And I'll choose, these are all those videos that you're seeing over here. Okay, are generated by us. So I'll just go ahead. I'll click on this. I'll choose this. Let's say I want this thumbnail. Okay, so this is the link of the thumbnail that I've got over here. I'll click on this. Let's see if we got the video or if we got the thumbnail. Okay, let's say I can take a screenshot of this if needed. For now, I'm just doing this thing. Otherwise, I can, like go ahead in my system and I can put these things as well if needed. I can fetch the thumbnail from there and I can put this. Open, save. Description. So ChatGPT might have given me each and everything. Description. Now add these 5 optimized skills. Project name. Skills are these things that it has given me. Generative AI, prompt engineering, AI content creation. The best relevant thing that could be added. Okay, AI content creation, additional skills, start month, end date. I'll just put currently working on this project. That's it. Click on save and your projects would be added. अब तुमने कोई website बनाई है, तुम लोग उसको put कर सकते हो. Okay, something went wrong. Yeah, projects, add media. Okay, maybe the thumbnail might not be supported over here. Make sure to take a PNG image and put it over here. Okay, click on save after that. And your project would be added. अब तुमने कोई वेबसाइट बनाई हो, कोई ऐप बनाया हो, तुम लोग जब AI का कोर्स कर रहे हो एट वाई कोर्स, तुम लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स किया, जो भी चीजें तुम लोग बना रहे हो उन सबको अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करते जाओ. दैट इज द बेस्ट थिंग to show to your recruiter, to show it to your clients. Because let's say as a client, अगर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ and मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि okay, so and so person, you need to do work for me. या तुम लोग मुझे बोल रहे हो okay चिराग sir, we'll do work for you. Okay, or we want to work for Y codes. ठीक है, I'll ask you कि ठीक है तुम लोग काम कर सकते हो, but पहले मुझे दिखाओ तुमने क्या काम कर रखा है, तुमने कहाँ से पढ़ाई कर रखी है, या तुमने क्या कोर्स कर रखा है and everything. Obviously, if you are doing course from us, you will get an advantage. Okay, you will get a top edge over there as well. You need to add those projects as well जो तुमने कोर्स की ड्यूरेशन में किया, सारी चीजें you need to mention so that clients, as a client I can see कि अच्छा ठीक है ये इसने वाइटवुड से काम किया है, कोर्स किया है, that is very good. मुझे समझ आ गया कि इसने काफी relevant skills सीखे हैं and इसने ये projects भी बना रखे हैं. So that will help the client get convinced कि okay इसने काम तो कर ही रखा है, मेरा भी काम कर देगा. So that is what you need to show to those clients as well.
Okay, so after adding the projects, our next step would be, this is a very detailed thing that we have brought for you. Okay, ये सारी चीजें हम लोग सारी चीजें एक ही वर्कशॉप में एक ही लेक्चर में लेके आए हैं, so that you can understand all of these things. Okay, featured section में लेट्स से तुम लोग कुछ पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से तुम लोगों ने अब यहाँ पे पोस्टिंग चालू कर दी, you can go about that, and उसके बाद तुम लोग यहाँ पे चीजों को ऐड करना चाहते हो, so make sure to mention all of those things as well. ठीक है, featured section is something like, I'll show you the featured section as well. सो लेट्स से आई गो ऑन टू माय लिंक्डइन प्रोफाइल, और अगर ये कभी स्टक हो जाए लोडिंग में और एवरीथिंग, तो एक दो बार सेव करके ट्राई कर लेना. अदरवाइज इन अ न्यू टैब गो टू लिंक्डइन. ओके, गो टू योर प्रोफाइल सेक्शन एंड मेक श्योर टू चेक कि एक्चुअल में वो चीज ऐड हो गई है या नहीं हुई है. ओके, अगर वो ऐड हो गई है, यू कैन क्लोज दैट टैब, एंड अगर नहीं हुई है, मेक श्योर टू आइदर रीलोड इट, आइदर ऐड इट अगेन. ओके, कभी कभी इश्यूज आ सकते हैं लिंक्डइन में, सो नो मैटर. Okay, it's completely fine. Okay, so I'll just close it. Okay, so there could be some issues in some case. It could tell you to reload and add these things over there. So make sure to go ahead and add relevant projects as well in the same way that I showed you. Next then, let's go on to the next step, featured section. Okay, so here would be your featured section. If you go ahead, you click on add section, we'll have a featured section as well, add featured. A featured may you can add certain post of yours. Okay, you can add post, you can add article that you wrote about, or you can add links. So maybe instead of the along with the project section, I can mention in the feature section as well. I can add that link. Okay, so I'll just go ahead and let's say I generated the website of Ycodes. I was a part of the team. Okay, Karthik was a part of the team who created this website during his web development and everything. You can choose the thumbnail. It would be a Ycodes ka logo over here. Okay, you can put the description, the best AI study buddy, something like that. Okay, click on save. And this is how you can add your links over here as well. And it would be shown in the featured section. Okay, so it would be shown somewhere over here, something like that. Okay, you can add more things to this as well. Let's say you want to add the YouTube channel of Ycodes if needed. You can add that as well. You can add all the relevant skills that you have worked at. Okay, so this is how you can add things. You can add if you are a business owner, make sure कि तुम लोग सारी जितनी भी कंपनीज की इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें पुट कर दो. अगर तुमने कहीं पे काम कर रखा है, इफ यू आर जॉब सीकर, तुम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो उसे. एंड इफ यू आर बिजनेस ओनर, मेक श्योर टू मेंशन ओनर, फाउंडर, एनीथिंग ऑफ योर्स. एंड वाइकोड्स का यहाँ पे इसलिए आ रहा है कंपनी अकाउंट, बिकॉज वाइकोड्स की कंपनी क्रिएटेड है एंड इट इज अवेलेबल एज अ कंपनी पेज एज वेल. इफ यू सर्च ओवर हियर, if you search for Ycodes, we'll get this over here as well. Okay, so you first need to create a LinkedIn account of yours, LinkedIn professional account of Ycodes, and that is how you can, add your company account as well. For that, you need to check out a LinkedIn mastery course or a LinkedIn or a digital marketing course as well. Just maybe talk about all of these social media platforms as well. Okay, so ये सारी चीजें that you can add over here. Okay, so make sure to go ahead with adding all of these things at the featured section. And 10 LinkedIn SEO optimization. Example searches Python developer, okay, digital marketing expert, UI designer. Add keywords in your headline about experience and skills. So अगर तुम लोगों को और optimize करनी है अपनी profile, make sure जो भी तुम लोगों की industry relevant keywords you are having, make sure to put that as well. Okay. Step 11, networking strategy. Hello, I came across your profile in the AI industry and would love to connect and learn from your insights. Let's say I want to reach out to someone, I want to connect with someone. It is always better to connect with someone in a professional manner. Okay, so you can go ahead, you can connect with me. Okay, and you can click on add a note. Okay, it will personalize your invite that you are sending. Okay, so hello, Chirag sir, I came across your profile during the AI, or you can mention LinkedIn optimization lecture or workshop. Okay, and would love to connect and learn from your insights. Okay, so you can go ahead, you can send me an invite and I'll accept all of the invites of yours that you guys are sending to me. Okay, so as soon as I accept your invite, you'll be connected with them. Okay, as well. So this is networking strategy that you can go ahead with, that you can do as well. Okay, and if you're reaching out to clients, in that case, what you need to do is you need to again click on the connect button. Then you need to go to ChatGPT and mention I need to reach out to a client, then mention its name, named Chirag Jain, who is the founder of Ycodes, and I want to provide him AI content creation
services which would help him grow his company and serve his clients faster. Okay, something like that. And I can contribute to the team as I have the relevant skills. Okay, so make sure you can go ahead and if you want to apply for a job, mention I'm looking for an internship or a job at your company. If you want to provide a service, mention I want to provide the service as a freelancer, something like that. Okay, you can mention this over there. If you are business owner, mention that. So उसी हिसाब से तुम्हारा जो chat GPT है वो तुम्हें ये profile बना के दे देगा. Okay, so this is the message that you have got. You can go ahead and you can like put this whenever you are sending connection request, or you can put it in messages as well. If you put it on message, you need to get the LinkedIn paid account in some cases. तुम्हें 5 messages free मिलते हैं या फिर 1 month का free trial तुम start कर सकते हो, and you can go ahead and reach as many people as you want. Otherwise, जब तुम connection request भेज रहे हो उस time पे ये put कर दो. That is free to do. Okay, that you can send as many as you want to with time, and that is something which is free to do. You need not to pay for it. टाइप्स ऑफ कंटेंट टू पोस्ट. अब तुम लर्निंग जर्नी अपनी पोस्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर सकते हो जिस पर तुम काम करो, टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स पोस्ट कर सकते हो, इंडस्ट्री इनसाइट्स जिस इंडस्ट्री में तुम बिलोंग करते हो, मार्केटिंग में, एआई में या फिर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, उसके बेसिस पे तुम लोग यहाँ पे चीजों का पुट कर सकते हो. जनरेट अ लिंक्डइन पोस्ट अबाउट लर्निंग एआई टूल्स एज अ बिगनर. ओके, इफ यू गो हेड, if you click on this again, our last lecture we also discussed how can we like go ahead and generate post using LinkedIn as well. So you can go ahead and you can use this as well. It will give you a very good poster, very good post that you can go ahead with. Now before versus after, पहले तुम लोगों की प्रोफाइल कैसे दिखती थी, अब तुम लोगों की प्रोफाइल कैसे दिखती है. इनकम्प्लीट प्रोफाइल थी, वीक हेडलाइंस थी, नो प्रोजेक्ट्स थे. आफ्टर प्रोफेशनल हेडलाइन, ऑप्टिमाइज समरी, स्ट्रॉन्ग स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स. रिजल्ट, रिक्रूटर फ्रेंडली प्रोफाइल बन चुकी है, चलता फिरता तुम्हारा ये सीवी बन चुका है. नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दैट यू वांट टू डू, that you need to do. Before that, let's see. This is the post that has been generated. Now, generate a relevant poster for the above post. Just mention this. Okay, keep things simple. इसके बेसिस पे तुम्हारे पास एक पोस्टर भी बन के आ जाएगा जो तुम इस LinkedIn पोस्ट के साथ पोस्ट कर सकते हो. It will enhance your visibility. It will enhance your reach of your post. Okay. There's one more thing that I'm having for you. Okay. For better post writing. Okay, so here's the thing. You need to go to GPT section, explore GPTs. Otherwise, you will find it in the notes section as well. Okay, there we have attached the link of all the GPTs that you'd be using, that you'd be needing. इसके basis पे तुम्हें काफी professional posts मिल जाएंगे, तुम्हें काफी professional content मिल जाएगा. Generate a post on, let's say, best skills to learn in 2026. Okay, on 5 best skills to learn to earn in 2026. Okay, relate it with field of AI. Okay, so you'll get an entire poster. Okay, not poster, you'll get the entire content that you can copy as it is. Okay, 5 skills to learn in 2026 if you want AI driven income. Okay, so this is the entire thing that you're having over here. Okay, there's one more thing that you'll see in my post that I usually do, that is highlighting these things. Okay, bold कर सकते हो तुम text को, तुम लोग इसमें underline कर सकते हो, तुम लोग इसमें italics add कर सकते हो. So you can do that as well. Okay, so for that, LinkedIn content formatter, search for this. Okay, so go to Typebro and make sure you will get this link from the notes section as well. Okay, so this is the entire thing that you're having over here. Now you need to optimize it. अगर तुम लोगों को इसमें spacing हटानी है, ठीक है, you can go ahead, you can do that thing. 5 skills to learn in 2026. You can bold this thing, and this is how you can optimize it as well. It will show you कि तुम लोगों का actual में ये post कैसे लगेगा, कि पहले ये आएगा, फिर कोई more पे click करेगा, तो उसके बाद ये सारी information आनी चालू होगी. So that is how you can do these things as well. Okay, and then you can go ahead. This is a poster, a very good poster that it has generated. Now let's say तुम लोगों को इसमें नहीं चाहिए था, तुम लोगों को 16:9 के रेशियो में चाहिए था. You can do that as well. ठीक है, अगर तुम लोग पोर्ट्रेट रेशियो में रखते हो, कभी कभी ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग भी वो होता है बिकॉज वो लंबा पोस्टर दिखता है. सो इट्स अप टू यू कैसे तुम लोगों को अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है. ओके, सो आई कैन जस्ट गो अहेड, आई कैन डाउनलोड दिस एंटायर थिंग.
ओके आई कैन ऑप्टिमाइज इट फर्दर. मैं इसमें स्पीक्स हटा के इसको थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ा सकता हूँ एंड आई गेट दिस इंटायर थिंग एग्जैक्टली एज आई वांटेड टू. ओके इन सारी हेडलाइंस को आई कैन turn it into bold. Maybe I can turn it into underline as well. Okay, so this is how you can go ahead and optimize this thing as well. I'll just go ahead. I'll go to the profile. Okay, yeah, either you can click on this to start a post, either you can go ahead over here. Okay, you can click on this. Let's say you want to go to activity section, create a post, then you can mention this entire thing. Okay, यहाँ पे सारी चीजें तुमने mention कर दी है कि क्या क्या तुम्हें लिखना है. You can click on this add media and जो तुमने अभी just poster choose किया था उसको तुम लोग यहाँ पे upload कर सकते हो. Let's say this was the poster, so drag and drop it over here and click on next, and this is the entire post that you have generated completely using AI. Just go ahead and post it. If you want to schedule it for later, you can do that as well. ओके सो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें करने में बहुत मजा होगा एंड तुम लोगों ने एकदम बेसिक से अपनी प्रोफाइल को इस लेवल पे ला चुका है. इट इज लुकिंग वेरी प्रोफेशनल. विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, सर्चेस बढ़ जाएंगे, तुम लोगों को जॉब्स मिलने चालू हो जाएंगे, तुम लोग नेटवर्क कर सकते हो लोगों के साथ इजीली, क्लाइंट्स को आउटरीच कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर प्रोफाइल. Okay, so this is how you should optimize this entire thing. Final checklist: professional photo done, professional brand banner done, strong headline done, optimized summary done, skills added. That is your about section basically. Skills added done, projects added done, and keywords included done. All of the things we have done over here. Okay, so this is a checklist that you need to keep with you. अगर तुम लोगों ने ये सारी चीजों का टिक कर चुका है, तो that means you're having this entire thing. Key takeaway: a strong LinkedIn profile can attract the recruiters, build professional credibility, create opportunities, and build your professional brand or build your personal brand. Okay, so this was the entire thing that combines entire knowledge that you can put into for your LinkedIn profile. कैसे तुम लोग एकदम बेसिक से हम लोग प्रोफाइल को ले गए एकदम एडवांस लेवल तक completely using AI. So this is some crazy things out there and हमारे पूरे prompt engineering mastery course में ऐसे ही और crazy things हम लोग discover करते हैं. So make sure to check that out as well. And this was the entire thing that we wanted to show you. Hope you guys enjoyed this entire workshop and the lecture, and see you guys in the upcoming lectures.